In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, today in IELTS speaking subtest of the day, we'll be just having some understanding and information about part 3 of it. आप जानते हैं part 1 is the basic part and part 3 is an advanced part. In part 3, it's the questions are a bit tricky, challenging, और आपने इसको बहुत accordingly tackle करना है. I mean to say that there are the questions are a bit lengthy sometime. Try to understand the task first. Try to understand the questions first. The more you understand, the better you answer. Number 1. Number 2 is there are 3 different parts, or rather 4 parts of the answer. Could be possibly 4 parts. पहले पार्ट में आप ओपिनियन दें क्वेश्चन की, उसके बाद आप उसकी रीजन दीजिए. ये दोनों पार्ट 1 में भी हैं. पार्ट 1 जो आइल्स का है, स्पीकिंग का, उसमें भी ओपिनियन और रीजन, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. और क्योंकि उसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं, इसलिए आप उसमें लॉन्ग आंसर नहीं दे सकते हैं. एंड देयर इज नो नीड टू, बिकॉज अगर आपको ज्यादा बोलने का शौक है तो आपके पास पार्ट 2 और 3 मौजूद है ज्यादा बोलने के लिए, लेंथी बात करने के लिए. और पार्ट 3 में आपने एक चीज और ऐड करनी है. इफ इट इज पॉसिबल गिव एक्सप्लेनेशन अपार्ट फ्रॉम ओपिनियन, रीजन, गिव एक्सप्लेनेशन. और फिर चौथी चीज है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ इट इज पॉसिबल and you have time and your mind is working and you have an example of the relevant question in your mind, उसको भी शामिल कर लीजिए अपने आंसर के अंदर. तो there should be 4 segments, not indispensable कि चारों हर सवाल के जवाब में आपने देने हैं, but roughly speaking if you include these 4 things in your IELTS speaking part 3, your answer would be lengthy and it will also cater the demands of the answer. So you're going to start. So over to you now. Thank you. So dear friends, our topic with part 3 would be, the first topic is about friends. और सवाल इसके बहुत simple है. I would like to start from the simple questions. The first question, I would rather ask one question from each member or each candidate, and you will give me the answer, and I'll see that to what extent you have been able to justify the answer. Okay, how important are friends to you? My friends are an important and magnificent part of my life. They are not just my friends, they are my sisters from other mothers. Because I don't have a sis, so I always consider them as my sisters. They are my comfort zone. Whenever I feel sad or bored, I call them and I know they will gonna make me laugh and I will be refreshed. I always feel comfortable and relaxed and content when I am with them. So I think it's very important to have such kinds of friends in your life. Excellent. माशाल्लाह, लेंथ भी ठीक थी, क्वेश्चंस के सेंटेंसेस भी आपने सही ग्रैपल किए हैं, अंडरस्टैंड किया, क्वेश्चन की रूह को अंडरस्टैंड करके आपने आंसर किया. That's lovely, amazing, simply amazing. The second question is, do you often go out with your friends? Yes, I often go out with my friends, usually on weekends. Usually on weekends I go outside with my friends. We do different things together. We arrange parties and enjoy a lot. During my college time, during my college years, I spend most of time with my friends, but nowadays I cannot hang out with my friends due to hectic schedule. Wow, that's great. Thank you. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है. अगर आप कंटेस्टेंट हैं अच्छे बैंड स्कोर्स के, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात एक जरूर करनी है. Do you often go out with your friends? मैंने पूछा आप, yes I often go out with my friends. No. आपने क्वेश्चन के वर्ड्स को यूज नहीं करना. इफ इट इज पॉसिबल कि आप उसे पैराफ्रेज कर सकें, इट्स द बेस्ट ऑप्शन. और अगर आप बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट एंगल से आगाज करें, सवाल वही जवाब वही हो, तो इट इज रियली इवन अमेजिंग टास्क. आप बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं, एग्जामिनर को एक्साइट कर रहे हैं कि भाई मैं नंबर दे दो थोड़े जे. सो वो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड. और एग्जामिनर को इम्प्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू ग्रैब बैड स्कोर से. बैड स्कोर सबसे ग्रैब करने हैं आपने, that's what impress करना है. For example, do you often go out with your friends?
Since you know that I have lots of friends, it's natural that sometimes you hang out with your friends outside. You go to the shopping malls, you go to the shopping centers, you go to different markets. Sometimes I go to the different restaurants. We have fun there, and it's quite lovely experience of my life. And I normally have time on the weekends. Last time I went to see my friends, and we had a picnic kind of activity there in the park. We also had our TikTok videos. It was amazing experience. I never miss out such a wonderful chance to meet my friends, to have videos with them. Yes. और समझिए सो इस तरह से आपने थोड़ा डिफरेंट हटके बोलना है, ये तो अच्छे नंबर ग्रैब करेगा. और अगर आपसे पूछती हैं कि डू यू ऑफन गो आउट विद योर फ्रेंड्स, तो आप इसको भी पैराफ्रेज कर सकती हैं. एब्सोल्युटली आई यूजुअली go out with my buddies, with my besties. थोड़ा थोड़ा आपने synonyms जहाँ जहाँ मिल रहे हैं आप उसको यूज कर रहे हैं. या sometimes I go with my friends and sometimes I go with my family. I don't have time for the friends only. I prefer to give some time to my family members as well. And I have some family friends. So it all depends on the circumstances, who are available for me, and with whom I can have the best time. I can spend the best time. All right? Yes. So इस तरह से आपने या उसे पैराफ्रेज कर देना है, और उससे भी उतले दर्जे की चीज़ ये है कि आपने थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आगाज करना है. डायरेक्ट उसको आंसर ना करें, इनडायरेक्टली आंसर करें, और फिर लेकिन आपने उसके ऊपर रहना है, आंसर के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर चढ़ के रहना है, क्वेश्चन के साथ साथ रहना है, क्वेश्चन से डिफरेंट नहीं होना. आपने साइड ट्रैकिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल डिफरेंट बोल रहे हैं आप उसी पर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से. इस तरह से क्या होगा, आपके बैंड स्कोर्स अच्छे आएंगे. आई होप यू गॉट इट. आपका आंसर चाहिए हमें. वेयर डू यू ऑफन मीट योर फ्रेंड्स? So, well, it depends on the situation you're in. For me, I'm a student, and the only time I get to be with my bros. वेरी नाइस. इन्होंने देखिए अच्छा आगाज किया. इन्होंने ये नहीं कहा आई मीट माई फ्रेंड्स एट द नेर वाला पुल, आई मीट माई फ्रेंड्स एट एम्पोरियम मॉल और पैकेज मॉल. ये नहीं कहा इन्होंने. इन्होंने कहा उन्होंने डिफरेंट स्टार्ट लिया है. आप फौरन उसको एज इट इज आंसर न करें. और द वर्स्ट आंसर जो बच्चों वाला आंसर होता है वो वही होता है कि जो पूछा है वही लफ्ज आपने दोबारा रिपीट करनी है. सो दे आर नॉट गोइंग टू प्लीज द एग्जामिनर. एग्जामिनर वुड थिंक दैट इसको तो कुछ शायद अपने पास से बनाना नहीं आता. तो आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है, तो आपने अच्छी लैंग्वेज का मुजाहरा करना है. जी प्लीज. Yeah, the only time I get to be with my bros is when I'm in university. In the morning, we usually meet in the cafeteria and have tea. And apart from that, usually at the off timings as well. But it's quite difficult for us to meet outside of university because we live quite far from one another. And it's quite difficult for me and for my friends to get together, to hang out and to go out and have fun. But that's probably the reason why we usually meet in university. And we prefer to do all sorts of activities after university and have all sort of things that we want. Like we go out to eat stuff and we do sports after university in our sports sector as well. Yeah, so that's the only time I get to be with friends. एक्सीलेंट. आपने अच्छा बात की है, आपने उसको एग्जाम्पलीफाई भी किया. लेकिन अगर आप बता सकते हैं साथ कि लास्ट टाइम वी वेंट टू द शॉपिंग मॉल एंड वी हैड अ डिनर देयर. It was Arcadian Cafe. It was very expensive, but we enjoyed a lot. We had a lot of fun. Oh, so इस तरह से, sorry. We contributed. Yeah, इस तरह से आप उसे आगे से खुद ग्रैब पकड़ लीजिए प्लीज आंसर को. सो इस तरह से आप उसको थोड़ा प्रिटेंड कर सकते हैं, थोड़ा आप उसको और एग्जाम्पल देना. इससे क्या होगा, ज़रा आपकी एक्सप्रेशन आपका भी अच्छा लगेगा और थोड़ा उसके अंदर डेप्थ भी आ जाएगी, और जो लेंथी आंसर होना चाहिए वो भी आपकी कंडीशन इससे जस्टिफाई होती है. थैंक यू सर. थैंक यू ब्रो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you usually do with your friends? I mean to say, what are the usually activities you have together? When I'm with my friends, we usually love to do all sorts of cool stuff like watching movie or grab some food or just chill and have good quality time spending with my friends. Well, when I'm with my friends, we usually love to do adventure or watch movies or play some epic games, and we also enjoy trying out new restaurants, fancy restaurants, and it's all about
spending good quality and unforgettable time with your friends and making memories and enjoying their company. Excellent answer. बहुत अच्छा. इनके grammatically structures were strong, solid, strong, और activities in a variety of activities बताई हैं. It was really amazing answer. और इनका कोई आपने देखा कि एक्शन भी बहुत गैर मामूली नहीं था. It was quite ordinary action. और एक्शन के मार्क्स भी नहीं है. आपको पता ही है कि स्पीकिंग में 4 चीज़ों का नंबर होते हैं जिसमें एक्शन शामिल बिल्कुल भी नहीं है. 4 चीज़ों में आपको पता ही है आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन होते हैं. बट इफ़ योर एक्सेंट इज ऑल्सो मॉडिफाइड और कैप्टिवेटिंग, इसके इम्प्रेशन अच्छा होगा, उससे फिर बहरहाल एग्जामिनर भी एक ह्यूमन बीइंग है, इम्प्रेस्ड होगा और आपको अच्छे बैंड स्कोर्स देगा. एनीवे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब डे के हवाले से, विच डे इज योर फेवरेट डे एंड व्हाई? As most people like Saturday because we have one day after for relaxation and enjoyment. Relaxation and enjoyment. And enjoyment. I also like Saturday because as I can relax and entertain myself through reading a book or watching a movie. Recently I watched a movie with my friends. We really enjoyed it because the movie was fantastic and we also spent some time on restaurant and we and in most places Saturday night is celebrated as a big event because people are free and they don't have a burden of any kind of thing. शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. थैंक यू वेरी मच. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपने इट वॉज रियली बहुत ही तहम्मुल से, बुर्दबारी से अच्छा आंसर आपने दिया है. और यू मीन टू यू आर गेटिंग गुड बैंड स्कोर्स एक्चुअली. ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, which day is your least favorite day and why? Monday for obvious is the start of the week and is still far from the Friday, and you realize you are going to have 5 days of work coming up and it's always a hard day trying to fit that in and trying to get any sleep. I always have Monday blues. माशा, आपने भी बहुत ही अच्छा आंसर दिया है और बहुत स्मार्टली प्ले किया आपने. रियली अप्रिशिएटेड. और तीन गाइस ने, आपने कॉन्टिन्यूसली आपकी थोड़ी क्लास में ज़रा थोड़ा और, आपका एक्सेंट भी अच्छा है तो आप थोड़ा सा और बेहतर हैं. आप लोगों ने बिल्कुल एक जैसा. अगर आपको बैंड स्कोर देना जो चाहूँ आपको, तो तीनों को मैं कंफर्टेबली 7 बैंड स्कोर दे सकता हूँ आपके इस पैटर्न ऑफ स्पीकिंग के ऊपर. जी प्लीज़, इट्स योर गोइंग टू बी योर क्वेश्चन प्लीज़. How do you usually spend your time? Yes, please. I get up early in the morning and then I go for my job. Normally, I spend my 8 to 9 hours on my job. After that, I came here, a Genius Institute for my IELTS exam preparation. After that, the rest of the time, usually I do my IELTS homework at home. Okay, so थोड़ा सा और इसको थोड़ा बेहतर करें. You talked about you just spend your time at Genius Institute, Lahore. Where is that located, and what would you like to say more about it? I want to know about this institute more. Yes, it is located on Tajbagh. This is very good institute. Oh my God! I thought perhaps you were going to say that it's located in my heart. Okay. It's true. Okay, and okay. So, would like to say something more about your answer, please. Yes, about my daily routine, IELTS exam preparation. Okay, fine. Thank you. थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है. अभी एट द मोमेंट कोई छक्का मारा है आपने, 6 का आंसर है आपका. इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है थोड़ा और, लेकिन पहले से आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कमिंग आउट ऑफ योर शेल, आप अपने खौल से बाहर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह. How do you usually spend your time के बाद? Do we need to ask you any question? Weekends के बारे में आपसे पूछें. So what is your favorite day of the weekend, please, and why? On weekend I do not go to work. I get up early in the morning, offer the prayers, then watering plant,
I go to park for a walk. I bring the breakfast. Oh my back God. away You bring the breakfast from home in the park in the park. and you do it I bring alone. I bring the breakfast away back. You prepared the breakfast in the evening and you. I go to park for a walk. Then I bring the breakfast back a walk. Where do you bring it from? From outside? Back home. Okay. Back home, when you reach at home, you do the breakfast. Yes. You make the breakfast or your wife makes the breakfast for you? Yes. No, कौन बनाता है? भाभी बनाती है नाश्ता, क्या बनाते हो? भाभी बनाती है. भाभी बनाती है और आप खाते हो? वीकेंड बाइक से शर्म लेकर. आनी चाहिए। Okay. Alright, तो कभी कभी खुद भी बना के कभी कभी खुद भी बना के नाश्ता भाभी को पेश किया कीजिए प्लीज। Yeah. In the afternoon, I usually go to park with family. We Really? usually go to shopping, go to park. In the evening, माशाल्लाह, in the evening, I watch the movies on TV. यार, you are spending ideal time of your life. My weekend is very relaxing. रिलैक्सिंग के बारे में सुन लीजिए। वो एक जो है वो सिख सरदार वो साहिल समंदर पर कंफर्टेबल चेयर पर, जो कंफर्ट चेयर होती है, दराज हुआ था वहाँ। तो वहाँ पास से गोरी गुजरी तो उसने कहा, हेलो मिस्टर सिंह, रिलैक्सिंग? कहता नहीं नथा सिंह। उसने कहा शायद मेरा रिलैक्सिंग नाम बता रही है, तो उसने कहा मेरा नाम, माय नेम इज हरनाम सिंह और गुरनाम सिंह। सो थैंक यू वेरी मच जी मिस्टर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और रवि, वी गोना स्टार्ट। Do you have any answer? What's the question, please? Sir, you can ask me any question. Actually, I was upset yesterday, so I didn't prepare. Your question will be, do you often go out with friends and why? Yeah, actually, I go out with friends on weekends. I really enjoy going outing with friends. Cause with friends I can do whatever I want. Whenever I go with my family, I can't do some things that I can do with my friends. So on weekends I'm very curious about knowing what are the things you can't perform with your family and you perform with your friends. Do you have some fishy activities? Actually, weekends, Slippery activities? No. How dare say? Oh, sorry. Okay. On weekends, we go on outing with friends or on restaurants. You have Vigo on your disposal on Saturdays. Vigo. Actually, on weekends, we go out with friends. Vigo is a vehicle. Not a vehicle. Actually, Vigo. Oh my God, Vigo. I thought we were talking about a Vigo. We have Vigo on our disposal. We friends just chill out somewhere. Actually, usually we go on our own bikes. We really enjoy winter, and on weekends we also go to in clubs. Or it's a snooker club. We can play snooker games and other things as well. And with family, we can't do these things. Thank you very much. I understand there are some joys you have with friends, and there are some parties or some flavors you taste with your family. But it all depends who you are with, and you have activities accordingly. Thank you very much. We are going to shortly see you guys who are our viewers with another bunch of questions from part 3. Thank you. Until then, God bless you all. Take care and bye-bye.